बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुलाम मुस्तफ़ा है। आज हम अपना 13 लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं राइट के टॉपिक के ऊपर। राइट्स को हम इस तरह डिस्क्राइब कर सकते हैं, देयर कैन बी नो ड्यूटी विदाउट अ राइट एंड अकॉर्डिंगली बट अ राइट इज वन person capacity of the obligation others to do what of a bear by mean not of his own strength but by the strength of the third party. If such third party is God, the right divine. In such third party is general public acting through opinion, the right is moral. If such third party is state acting directly or indirectly, the right is legal. इसको फर्दर मोर हम इस तरह भी कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू ग्रे, राइट a legal right is the power which is a man has to take a person या persons do or to refrain from doing and a certain act or the certain act so far as the power arises from the society impossible a legal duty upon a person or a persons. In wider sense, we can say that in a legal right include all the legally recognized interest, whether it corresponds to a legal duty or not. It is an addition or benefit conferred upon a person or a rules. एक लीगल राइट एक बंदे का हक, एक बंदे की ड्यूटी होती है जो कि दूसरे बंदे के लिए जिम्मेदारी का बायस बनती है। एक बंदे के ऊपर कोई भी ऑब्लिगेशन, कोई भी फरीज़ा जो राइज होता है वो दूसरे बंदे का राइट बन जाता है। इसी को हम राइट की डेफिनेशंस में लिख सकते हैं। फर्दरमोर, लीगल राइट अकॉर्डिंग टू Hebert, a right is a person capacity of the obligations the other to do or to forbid by means or not his own strength, but by the strength of the third party. If a such third party is called, the right is divine. If such party is the public general acting through the opinion, the right is the moral. If third party is the state acting directly or indirectly, the right is legal. इसको हम एबर्ट के मुताबिक हक एक शख्स की सलाहियत है जो कि अपनी ताकत से नहीं बल्कि किसी तीसरी फरीक की ताकत से दूसरों को करने या बर्दाश्त करने पर मजबूर करता है। अगर तीसरा शख्स या तीसरा हिस्सा जो है वो खुदा है तो हक इलाही है, और अगर तीसरा शख्स के आम तौर पर राय के बावजूद आम तौर पर काम करता है तो हक इखलाकी है, और अगर तीसरा हिस्सा स्टेट है तो वास्ता या बिला वास्ता काम कर रहा है तो ये हक लीगली है या कानूनी है। ये इसकी ट्रांसलेशन थी। अकॉर्डिंग टू ग्रे के मुताबिक a legal right is the power which is the man has to take in the persons or a person to refrain, एक ताकत जो कि एक पर्सन या एक से ज़्यादा पर्सन को रिस्ट्रेन करती है फ्रॉम डूइंग सर्टेन एक्ट, कोई काम करने के लिए, और सर्टेन एक्ट so far for power arising from the society impossible legal duty upon the persons or a persons, किसी एक या एक से ज़्यादा शख्स के ऊपर जो राइट ड्यूटीज़ जो इम्पोज करती हैं उनको करने के लिए, ये उसके डेफिनेशन में आता है अकॉर्डिंग टू ग्रे। इन वाइडर सेंस, द लीगल राइट इंक्लूड ऑल द लीगल रिकग्नाइजेशंस। जो लीगल राइट है वो वाइडर सेंस में उनको तमाम जो लीगली राइट्स हैं उनको इम्पोज करता है, वेदर इट्स कोरस्पॉन्डेंस टू द लीगल, अगर ये इनकी कोरस्पॉन्डेंस लीगल है या इलीगल है, और बेनिफिट्स कंसर्न हो रहा प्रेजेंट बाय अ लॉ, और अगर ये कानून के मुताबिक हैं। इसके साथ ही इसके नेक्स्ट पे चलते हैं जी। काइंड्स इन परफेक्ट है, इम्परफेक्ट है, रियल एंड पर्सनल राइट है, राइट इन रेम एंड राइट इन पर्सोनम, प्रोपोर्शनली राइट्स हैं और पर्सनल राइट्स हैं। परफेक्ट राइट और इम्परफेक्ट राइट, इनको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। फॉलोइंग आर द काइंड्स ऑफ लीगल राइट्स
ये लीगल राइट्स की किस्में हैं, परफेक्ट और इम्परफेक्ट राइट। परफेक्ट राइट अकॉर्डिंग टू सैलमन, a perfect right is the one of which corresponds to the perfect duty which is enforced by law। सैलमन के मुताबिक परफेक्ट राइट को हम इस तरह बयान कर सकते हैं, वन ऑफ द विच corresponds टू परफेक्ट ड्यूटी, जो कि एक परफेक्ट ड्यूटी अंजाम देते हैं, विच इज़ enforced by law, जो कि कानून की तरफ से या कानूनी तौर पर उसको ड्यूटी बाउंड करता है, एक परफेक्ट राइट को ड्यूटी बाउंड करता है, इन्हें हम परफेक्ट राइट कहते हैं। इसकी एक एग्जांपल देखते हैं जी। कॉन्ट्रैक्ट स्पेशली इन्फोर्स थ्रू द कोर्ट ऑफ लॉ, एन एग्जांपल ऑफ द परफेक्ट राइट। एक कॉन्ट्रैक्ट एक इन्फोर्स स्पेशली इन्फोर्स, जो कि कोर्ट किसी कॉन्ट्रैक्ट को ड्यूटी बाउंड करता है, इसको करने के लिए ड्यूटी बाउंड करता है, इसको परफेक्ट राइट कहते हैं। जैसे खुला की डिग्री, खुला लेना हर औरत का हक है। अगर उसके अपने शौहर के साथ कोई किसी तरह का मिसएडवेंचर होता है तो उसका कानूनी हक है और कोर्ट उसके लिए जो है वो ड्यूटी बाउंड है कि उसको कॉन्ट्रैक्ट करे या ब्रेक ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को करे। इम्परफेक्ट राइट सेकंड इसकी एग्जांपल है। इम्परफेक्ट राइट इज दैट विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ बट कैन नॉट इन्फोर्स बाय द लॉ, जो कि लॉ की तरफ से डिक्लेयर तो किया जाए लेकिन फोर्स ना किया जाए, ड्यू टू सम इम्पेडमेंट्स से मुराद मुजाहमत कि कानून की तरफ से कुछ जो है उसको रिकग्नाइज तो किया जाए लेकिन उसको इन्फोर्स ना किया जाए। दीज मे बी टर्न इनटू द परफेक्ट राइट, तो ये इनको परफेक्ट राइट में टर्न कर देता है। इसकी एग्जांपल लेते हैं। अ सूट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ सम राइट्स हैज़ टू बी ब्रॉट विद इन अ पीरियड ऑफ लिमिट, जो एक सूट है इन्फोर्स करने के लिए कुछ हकूक को विद इन अ टाइम पीरियड में, एज अ प्रोविजंस इन द लिमिटेशन एक्ट, अदरवाइज इट विल बी टाइम बार्ड, बैटली टाइम बार्ड। विद इन टाइम लिमिट, अगर आप किसी के साथ ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो विद इन टाइम लिमिट्स आपको कोर्ट्स के अंदर आकर अपनी अग्रीवियंस को साबित करना होता है, आपको अपने पार्ट्स की चीज़ साबित करनी होती है कि अगले बंदे ने मेरे साथ इम्बैलेंसिंग की है विद इन अ टाइम। अगर आप टाइम के अंदर नहीं आते तो कोर्ट इसमें आपको एक चीज़ क्या कि आपकी पिटिशन को रिजेक्ट कर देती है कि दिस पिटिशन इज टाइम बार्ड। इसके बाद ही नेक्स्ट वन पे चलते हैं, रियल एंड पर्सनल राइट्स। रियल एंड पर्सनल राइट्स, रियल राइट्स को पहले हम अकॉर्डिंग टू सैलमन के मुताबिक देखेंगे। रियल राइट कोरस्पॉन्डेंट टू अ ड्यूटी इम्पोज अपॉन द पर्सन्स इन जनरली, ये जो सैलमन कह रहे हैं कि कोरस्पॉन्डेंस करते हैं और ड्यूटी इम्पोज करते हैं सम पर्सन के ऊपर जनरली आमतौर पर, इट इज़ अवेलेबल अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। रियल राइट्स are the generis negative rights as the duties which can be accept from the whole world are of the negative characters। ये जनरली तौर पर किसी के ऊपर एक ड्यूटी इम्पोज करते हैं विच कैन बी एक्सेप्ट, जो कि इसके अलावा जो पूरी दुनिया के ऊपर जो नेगेटिव करेक्टर्स हैं इनके अलावा। इसकी एग्जांपल देखते हैं। आई हैव अ राइट नॉट टू बी डिप्राइव ऑफ माई लाइफ इन अ रेयर राइज, जो डिप्राइव मतलब छीन लेना, मेरे एक हक है कि कोई मुझसे मेरी ज़िंदगी को छीन नहीं सकता। इट इज़ अवेलेबल अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, ये पूरी दुनिया के खिलाफ है कि कोई भी बंदा मेरे जो ज़िंदगी है उसको छीन नहीं सकता। नेक्स्ट वन है राइट पर्सनल राइट भी इसको बोलते हैं। अ पर्सनल राइट कोरस्पॉन्डेंट टू ड्यूटी इम्पोज अपॉन द डिटरमिनेट इंडिविजुअल्स, एक ऐसा राइट जो कि एक इंडिविजुअल एक सिंगल वाहिद फर्द के ऊपर एक ड्यूटी इम्पोज करता है। इट इज़ अवेलेबल ओनली अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन, ये किसी खास तरह के लोगों के ऊपर जो ड्यूटी है वो इम्पोज की जाती है। पर्सनल राइट्स आर द जनरली पॉजिटिव राइट्स एज इम्पोज अ ड्यूटी ऑन अ पर्टिकुलर पर्सन टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग। पर्सनल राइट किसी पर्सनल राइट पॉजिटिवली तौर पर किसी बंदे के ऊपर एक ड्यूटी इम्पोज करता है कि उन्होंने क्या काम करना है और किस चीज़ से मना रहना है या क्या काम उन्होंने नहीं करना। इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। आई हैव अ पर्सनल राइट टू रिसीव अ कंपनसेशन फ्रॉम एनी इंडिविजुअल हु इज़ एनीवेयर हार्म मी, अगर कोई बंदा किसी को किसी तरह का कोई
ग्रीवियंस कोई विक्टिमाइज करता है तो उसके खिलाफ आप कंपनसेशन रिसीव कर सकते हैं। ये इसका पर्सनल राइट है कि पर्सनल कैपेसिटी में उससे ऐसा किया जा सकता है। इसे पर्सनल राइट या राइट ऑफ पर्सोनम भी कहते हैं। राइट इन रेम है जी और राइट इन पर्सोनम है जी। राइट इन रेम एंड राइट इन पर्सोनम। राइट इन रेम in it is derived from the Roman word act on rem. It is available against the whole world. Examples are right of the ownership and possessions. My right of the possessions and ownership is protected by law against those who may interfere with the same. Right in personam है जी। It is derived from the Roman word term acting in the personam. Right in personam corresponds to the duty imposed upon the determinate persons. जो राइट इन पर्सोनम है वो किसी सिंगल वाहिद शख्स के ऊपर एक ड्यूटी इम्पोज करता है कि वो इसके ऊपर ड्यूटी लगाए, इसकी ड्यूटी बाउंड करे। इसकी एग्जांपल देखते हैं जी। राइट अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट आर राइट इन पर्सोनम एज ए पार्टी। जो राइट इन पर्सोनम है वो ड्यूटी बाउंड करता है किसी पार्टीज को टू द कॉन्ट्रैक्ट अलोन आर बाउंड बाइट, जो कि इसको बाउंड करता है, ड्यूटी बाउंड करता है कि वो ड्यूटी बाउंड होकर इसके राइट्स को फुलफिल करे। इसके साथ ही नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रोप्राइटरी एंड पर्सनल राइट्स। प्रोप्राइटरी जैसे कि मलकियती राइट्स को मैंने पहले भी डिफाइन किया है, दोबारा इसको देखते हैं। प्रोप्राइटरी एंड पर्सनल राइट्स। Proprietary rights are those rights in which includes his estate, his assets, and his property. It may be formed. They have some economic and monetary values. They possess the both judicial and economic importance. Example है जी, the right to debt, the right to goodwill. अगर किसी के पास right to debt, किसी का कर्जा लेने देने का कोई इख्तियार है तो वो इसका राइट टू मलकती राइट कहलाएगा और इसको जुडिशरी तौर पर और इकोनॉमिकल माशी और अदलिया के तौर पर दोनों के हकूक़ हासिल है। पर्सनल राइट है जी। पर्सनल राइट पर्टेन टू मैन स्टैट्यूट और सम स्टैंडिंग इन लॉ। दे प्रमोट द मैन्स वेल बीइंग। पर्सनल राइट पोजेस मेयरली जुडिशल इम्पोर्टेंस। जो राइट पर्सनल्स हैं इनको पर्सनली तौर पर प्रमोट किया जाता है, किसी जुडिशल पोजीशन की वजह से इनको अहमियत हासिल है। इसकी एग्जांपल देखते हैं। राइट ऑफ लाइफ, रेपुटेशंस, जो ज़िंदगी के हकूक़ हैं और उनकी रेपुटेशंस हैं, आर द पर्सनल राइट, की किसी ज़ाती इनफरादी तौर पर किसी शख्स के राइट है। इसके साथ ही हम नेक्स्ट लेवल चलते हैं जी। इनहेरिटेबल और अनइनहेरिटेबल राइट्स है। Inheritable rights are those which are servals its own. Example, he dies, leave his property behind him. Be his legal heirs become owner of such property. This is an inheritable rights. Uninheritable rights. A is unheritable if it dies with its own. A example given. Personal rights die with the owner and cannot be inherit. Inherit मतलब विरासती राइट्स है। मिस्टर ए मरता है तो उसके मरने के बाद जो कानूनी तौर पर उसकी सारी जायदाद होती है वो उसके लीगल वारिसान में तकसीम हो जाती है। ये हेरिट राइट है, इनहेरिट राइट्स है। और अनइनहेरिट राइट्स वो होते हैं कि ए के मरने के बाद उनकी सारे राइट्स, अगर ए ने मिस्टर ए ने किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ तो उसके मरने के बाद उसके सारे कॉन्ट्रैक्ट्स भी ख़त्म हो जाते हैं। इसको अनइनहेरिट राइट का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट वन
टर्म है जी राइट इन रिप्रोप्रिया एंड राइट इन री एलिनिया. Right in repropria. Right in repropria are described that those rights in one's owner property there are complete rights to which the other right can be attached. एक ऐसा राइट जिसमें एक के पास सारे मुकम्मल अख्तियार है दूसरा राइट भी उसको अटैच कर दिया जाता है. इसके एग्जांपल से देखते हैं. द ओनर of the cattle has a right to the propria over it. Or right in the alinea. Right in alinea are those rights over the property of the another person. These rights degrade from the right of other persons and add to the right of their whole. Example है जी My right of way across to land another person's is the right to re-alienate. इसमें बेसिक डिफरेंस ये है कि राइट ऑफ री-एलिनिया में हम किसी और की प्रॉपर्टी को के भी मालिक हो जाते हैं. जैसे जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी के ज़रिए हमें राइट्स जो हैं वो मुंतकिल हो जाते हैं. उसके बाद हम अपनी प्रॉपर्टी के साथ साथ उनके भी मालिक हो जाते हैं. प्रिंसिपल राइट एंड एक्सेसरी राइट्स. प्रिंसिपल राइट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर राइट्स. एक्सेसरी राइट्स आर अप्रोप्रिएट ऑन द अदर राइट्स एंड दे हैव द बेनिफिट इफेक्ट ऑन द प्रिंसिपल राइट. एग्जांपल एक्स ओनर मनी टू वाई and he execute the mortgage deed in favor to Y. The debt is the principal right and the security in the form of mortgage is the accessory right. इसके साथ ही नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं जी. लीगल एंड इक्विटेबल राइट. Legal and equitable rights. Legal rights are those rights which are recognized by the common law. Example given: right of vote. Equitable rights are those rights which are recognized by the court of chancery. Example: the right of the mortgage to redeem the property by regard it as a certain of the court of equity and is an equitable right known as the equity of the redemption. इसके बाद है प्राइमरी एंड सेकेंडरी राइट्स. प्राइमरी एंड सेकेंडरी राइट्स. प्राइमरी राइट्स आर दोज राइट्स which is intact sanctions or enjoy the rights. These are those rights which are independent of the wrong have been committed. They exist for their own sake. They are intended to the wrongful act or omission. Example: right to reputation, right to life. Secondary right. Secondary rights are also called sanctioning, restorative, and remedial rights. Secondary rights are a part of the machinery provided by the state for the redress of injury done to the primary rights. Their necessity arises on accounts of the fact that primary rights are very often violated by the person. Right to obtain compensations for defamation to person. इसके बाद है जी पब्लिक एंड प्राइवेट राइट. पब्लिक एंड प्राइवेट राइट a right which is possessed by the every member of the public. It is between the state and the private individual persons. इसकी एग्जांपल है राइट टू वोट. प्राइवेट राइट है जी. A private right is concerned only with the individuals. Both the parties concerned with the
Right or private right. Contract entered into the two individual parties is known as private right. इसके साथ ही नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जी. Vested and contingent right. Vested right, a right is a right in respect of which all the event necessary to vest in completely in the owner have happened, no other condition demand to be satisfied. If a valid example, if a valid deed of transfer of executed by A in favor of B, B acquired as a vested right. Contingent right, according to pattern, when part of the investive fact have occurred, the right of contingent until the happen of all the facts on which the title of depend. Example है जी, an executive deed in favor of B, according to which the title to the possessions of certain property when the attain at the age of 21, the right of the contingent right, and it will be vest only when the attain the age of 21. इसके बाद है जी servant and dominate right. And servant right is one which is subject to the derogate from it may be contingent as a dominate. Next one है जी municipal and international right. Municipal rights are conferred by the law of the country. It is enjoyed by the individual living in the country. International rights are those rights conferred by the international laws. इसके बाद है जी right at rest and right in motion. When a right is start with the refer to it, orbit or it the infringement, it is a right of rest. Or orbit means the existence of the advantages conferred by such as right, and infringement means an act which is interfere with the enjoyment of those advantages caused by which is right as a either connected or disconnected with persons are discussed under the right in motion. Ordinary and fundamental right. Some rights are ordinary rights and some are fundamental rights that distinguish between the two lines that the fundamental rights are often guaranteed by the Constitution, the right of life, liberty, etc. Jus and rem. A jus and rem is a right to right. It is always a right in personam. Example: A said to house to B. B acquired a right against A to have the right transfer to himself. इसके साथ ही आज का लेक्चर इख्तिताम पजीर होता है. अपना ख्याल रखें, अपने गिर्द के माहौल को साफ सुथरा रखें, 5 टाइम नमाज बाजमात अदा करें. अल्लाह हाफिज़.